वाले LVM3 रॉकेट का प्रयोग कर अब तक के सबसे भारी उपग्रह 6100 किलोग्राम संचार उपग्रह को 520 किलोमीटर की निम्न गोलाकार भू कक्षा में 53 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित करने जा रहे हैं। मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर सुश्री माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष के प्रमोशन से पूरी जानकारियां यहां आप तक साझा कर रहे हैं। यहां वैज्ञानिक गण इन सभी आंकड़ों पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रमोशन की उल्टी गिनती 24 घंटे पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। इन सभी गतिविधियों के पश्चात LVM3-M6 का प्रमोशन आज 24 दिसंबर 2025 को भारतीय मानक समयानुसार सुबह 8:55 और 30 सेकंड पर श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोशन मंच से किया जाएगा। Namaste and good morning viewers. This is a typical winter morning here at Sriharikota while the LVM3-M6 launch vehicle is standing in all attention for carrying the customer satellite BlueBird Block-2. This mission is set to create a record for the highest payload to be carried by LVM3 rockets so far. I am Madhuri giving the commentary in English from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, in the southern state of Andhra Pradesh in India. With me in the commentary box is Sri Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. The launch is scheduled at 8:55 hours and 30 seconds Indian Standard Time today, that is on the 24th of December 2025 from the second launch pad. The intent of the launch is to place the BlueBird Block-2 communication satellite of AST Space Mobile USA in 520 km circular orbit with an inclination of 53 degrees. Weight of the satellite is 6,100 kilograms, which is the highest so far launched by the LVM3 rocket. उड़ान की उल्टी गिनती चालू है और इस समय हम उड़ान से 27 मिनट की दूरी पर हैं। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जो वर्तमान उपग्रह है जिसे प्रमोचित किया जा रहा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष आधारित मोबाइल सेवाओं में उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। इस उपग्रह को सैटेलाइट से सीधे स्मार्टफोन से जोड़कर संचार सेवाओं के लिए अभिकल्पित किया गया है। ब्लूबर्ड की श्रृंखला में यह उपग्रह विशाल संचार श्रृंखलाओं की विशेषताएं लिए हुए है, जो कि कुल 2400 स्क्वायर फीट तक विस्तृत हो सकते हैं और यह ऐसा करने वाला अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन भारतीय अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल US द्वारा आपसी समझौते के तहत जारी है। रोजर। इस साल हमने GSLV F-15, GSLV F-16 और LVM3-M5 के सफल प्रक्षेपण देखे और आज हम तैयार हैं एक और समर्पित वाणिज्यिक मिशन के लिए। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसरो भारतवर्ष की जरूरतों को पूरा करते हुए वैश्विक स्तर पर भी अपने परचम लहराने में सक्षम रहा है। रोजर। Up next, we bring to you the integration video for this mission, the LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission. अभी आप देख रहे हैं यह नोजल एंड सेगमेंट है प्रथम चरण का S200, जो कि प्रथम चरण है LVM3 रॉकेट का। उसको S200 के 3 खंड होते हैं, नोजल एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और हेड एंड सेगमेंट। T-25 मिनट। ये नोजल एंड सेगमेंट के ऊपर मिडिल सेगमेंट लगाया गया और ये हेड एंड सेगमेंट है। ये सबसे ऊपरी खंड है S200 बूस्टर का। बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। यह तैयार है S200 बूस्टर और यह है उसका इग्नाइटर, जो कि इस बड़े बूस्टर को इग्नाइट करता है।
The visuals from the solid stage assembly building where the two S200s are individually prepared and then handled on to be placed on the mobile launch pedestal. The two motors form the pitch plus and pitch minus side of the rocket. This is the second S200 motor, igniter having assembled, they are ready, and now these are the L110 core stage prepared in its integration building and being moved to the solid stage assembly building for integration. यह द्वितीय चरण है जिसे L110 स्टेज कहा जाता है। इसमें दो हाई थ्रस्ट विकास इंजन्स लगे हुए हैं। इसे IPRC महेंद्रगिरी पर पूर्ण परीक्षण कर यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। आगे की गतिविधियां यहाँ पूर्ण की जाती हैं। इसे यान के साथ समायोजित कर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। The partially assembled rocket has been brought to the vehicle assembly building for the cryo stage and spacecraft assembly. This is the cryogenic stage C25 being brought in an horizontal condition to be tilted and handled. यह क्रायोजेनिक स्टेज है जिसे L110 स्टेज के ऊपर समायोजित किया जा रहा है। क्रायोजेनिक स्टेज क्रायो ईंधन का प्रयोग करता है। ये इक्विपमेंट बे लगाया जा रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स पैकेज, प्रोसेसर्स सब यहाँ उपस्थित रहते हैं। The brain of the rocket, the equipment bay, and here comes the spacecraft, BlueBird Block-2, being encapsulated in a clean room facility. अभी अभी आपने देखा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को एनकैप्सुलेट कर दिया गया है हीट शील्ड के अंदर। एनकैप्सुलेट असेंबली यानी हमारा उपग्रह, पेलोड एडेप्टर और हीट शील्ड, इन तीनों के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहा जाता है। एनकैप्सुलेटेड असेंबली को यहाँ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाकर समायोजित कर दिया गया यान पर और इस तरह पूरा यान तैयार हो चुका है। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से उम्बिलिकल टावर लाया जा रहा है। The vehicle assembly building is about a kilometer away from the launch pad. The rocket is being moved carefully for further operations at the launch pad. LVM3-M6 रॉकेट पूर्ण तैयार है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए द्वितीय प्रमोशन मंच पर सज्ज है। दर्शक दीर्घ यहाँ उपस्थित। काफी ठंड होने के बावजूद यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। अब हम उड़ान से 21 मिनट 16 सेकंड की दूरी पर हैं। CNC to TTC director, all strike elements are ready. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है। LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission launch. TTC director, Roger. T-21 minutes. All stations change over to channel 2. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान हमने यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी कर ली है। L110 स्टेज में तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। सुनियोजित तरीके से सभी आवश्यक गतिविधियां पूर्ण की जा रही हैं। क्रायो स्टेज को भी तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान सभी प्रमोशन यान के लिए अनुकूल हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा चुके हैं, इसलिए काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है। कुछ ही क्षणों में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में चेकआउट कंप्यूटर्स द्वारा आवश्यक प्रचालों की निगरानी की जाएगी और T0 पर S200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। The BlueBird Block-2 mission is a part of global LEO constellation to provide direct-to-mobile connectivity through satellite. This constellation will enable 4G and 5G services. The LVM-3 launch vehicle is steadily carving its niche in the commercial launch vehicle arena. Today's launch is the 9th launch for the rocket
All the previous 8 Vehicle Director missions to have Mission Director, scripted tales of LVM3-M6 success. Vehicle systems are Present ready to launch proceed is with the third ALS. commercial mission. Mission Director Roger. इसरो के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित, और ये अभी आपने देखा मिशन डायरेक्टर ने अनुमोदन दे दिया है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का। Range Operations Director to Mission Director. All range systems are ready for the launch of LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of TTC network element for supporting LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission. Mission Director Roger. Satellite Director to Mission Director. Satellite is ready for automatic launch. Mission Director Roger. Based on clearance from Mission Readiness Review and Launch Authorization Board and readiness of vehicle, spacecraft, TTC network and range, Mission Director hereby authorizes for the commencement of automatic launch sequence operations for launch of LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission today, 24th December 2025, 08 hours 55 minutes 30 seconds. All stations to note, Mission Director authorized the launch of LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission. अभी अभी आपने देखा अंतरिक्ष यान निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी। संतोषजनक स्थिति की पुष्टि होने पर मिशन निदेशक ने यान के प्रमोशन का अनुमोदन दे दिया है और अब प्रमोशन यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। The countdown for LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission has been 24 hours long and commenced on 23rd December, that is yesterday, at 8:54 hours. During this time, the Earth storable propellants were serviced into the launch vehicle to begin with. The onboard gas bottles have been charged. The cryogenic propellants are serviced closer to the time of launch through a cryo arm mated to the launch vehicle. The meteorology team at the launch center tirelessly obtained the data on the prevailing weather and wind conditions. LCC2 and VLCC2 note, timing confirmed, external hold mode. VLCC Roger. The range instrumentation systems like radars verify their transmission. The onboard batteries are charged. Based on the satisfactory readiness of all the systems, a go-ahead clearance is given to start the automatic launch sequence, leading to the liftoff a few minutes later. TCTC, data loggers are on it, SHAR-1, SHAR-2. In a concert of all time-bound activities that culminate towards the launch, the various systems of the launch vehicle, satellite tracking and the range get ready in all respects. Based on the confirmation of readiness of all crucial elements, the mission director authorizes the commencement of automatic launch sequence, which comprises of a capsule of very essential checks. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode very close to the launch. Vehicle Director console to ALS console. Vehicle Director authorizes for the automatic launch sequence for the LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission. LSC Roger. GS servers activated. MC confirms data from SHAR-1 and SHAR-2. Automatic launch sequence initiated for LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया गया है। अब कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात तथा अंतिम जांच के पश्चात ऑनबोर्ड कंप्यूटर स्वतः ही प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू करेगा। We are 15 minutes away from the launch. Meanwhile, let me give you a brief about the rocket. The LVM-3 rocket 15 minutes. stands 43.5 meters tall and weighs 640 tons at liftoff. It is a three-stage launch vehicle. The first stage being the two S-200 strap-on boosters operating on HTPB-based solid propellant. There is 204-ton propellant in each booster, while its size is
describe the mission events? The ignition of the two S-200 boosters simultaneously marks the T0 scheduled at 8:55:30 seconds, and the launch vehicle LVM3-M6 lifts off. The nominal burn Over the years, ISRO has established itself as a trusted global space player, successfully launching over 400 foreign satellites and demonstrating unmatched technical expertise and reliability. From PSLV-C2, carrying Germany's DLR Tubsat and South Korea's Kitsat-3, to the record-breaking PSLV-C37, deploying 101 customer satellites in one go, and recent missions like LVM3-M2 OneWeb India 1, LVM3-M3 OneWeb India 2, and PSLV-C59 Proba 3. ISRO continues advancing space technology with precision and innovation. ISRO is now set to embark on yet another landmark commercial mission, the LVM3-M6 BlueBird mission, to launch the US-based AST SpaceMobile's BlueBird communication satellite, Block-2, through New Space India Limited as a public sector undertaking of the Government of India under the Department of Space. LVM-3 launch vehicle is the ISRO's heaviest vehicle. Through its LVM3-M6 mission, it will deploy the BlueBird Block-2 satellite, weighing around 6,000 kilograms, into low Earth orbit. The BlueBird Block-2 series forms part of Space Mobile Constellation Network, designed to provide direct-to-smartphone voice and broadband connectivity anywhere on Earth, without the need for ground hardware. The LVM-3 vehicle has an impeccable 100% proven success track record and has powered some of India's most prestigious missions, including Chandrayaan 2 and 3 and CMS-3 missions. Technically, LVM-3 is a three-stage launch vehicle featuring two S-200 solid strap-on boosters, a liquid core stage, L-110, and an indigenously developed high-thrust cryogenic upper stage, C-25, powered by liquid oxygen, LOX, and liquid hydrogen, LH2. Standing 43.5 meters tall, with a gross liftoff mass of 640 tons and a 5-meter diameter payload fairing, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India has soared to the forefront of global space exploration. His transformative space reforms have ignited a new era of innovation, ambition, and discovery. With this mission, ISRO will once again showcase its mastery, reaffirming India's unstoppable rise as a global space power. The mission events for this upcoming mission are going to be like this. At the burnout of L-110, the velocity of the rocket will be 1.5 kilometers per second.
The separation of payload fairing and initiation of closed loop guidance will take place at 174 seconds and 179 seconds respectively into the flight. Since by then the rocket